So hello there guys, welcome to Shifting Gears and this is my KTM 390 Adventure. ये मेरी खुद की बाइक है and this is not a review but more of an ownership experience. Just to give you a quick update, मैंने थोड़ी decals लगाए हैं यहाँ पे on my motorcycle thanks to 100 kmph. I just purchased them and I think it looks dope, at least to me. You can leave your comments below if you think it looks good or not. So this is what my bike looks right now. स्टॉक मोटरसाइकिल है, ज़्यादा कोई चेंजेस मैंने नहीं किए हैं. आई हैव जस्ट रिमूव दिस नंबर प्लेट एक्सटेंशन और यहाँ पे जो अगली सारी गार्ड था वो मैंने हटा दिया है एंड इट हैज़ गिवन द बाइक अ वेरी नाइस लुक फ्रॉम बिहाइंड. आई रियली लाइक माई मोटरसाइकिल एंड लेट्स राइड इट. और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इफ़ दिस KTM 390 एडवेंचर इज़ अ गुड टूरिंग मोटरसाइकिल और नॉट. लॉकडाउन थोड़ा बहुत ease out हो चुका है and I am just going to take it for a spin on the highway to tell you a few crucial details about this motorcycle. मैंने ये बाइक फरवरी में ख़रीदी है so I have learned a few things about this one. अब specifications तो हमें इस बाइक के already पता है. This is based on the 390 Duke. So this KTM 390 Adventure powered by the same 373cc liquid cooled engine. 32 किलोवाट्स की पीक पावर आपको इस बाइक के साथ मिलती है. 37 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिल जाता है. यू स्टिल हैव द PASC स्लिपर असिस्ट एंटी हॉपिंग क्लच सिस्टम एंड यू हैव अ मल्टीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जो इस सेगमेंट में और कोई बाइक आपको ऑफर नहीं करती हैं. फॉर एग्जाम्पल यू गेट ट्रैक्शन कंट्रोल, यू गेट क्विक शिफ्टर विद ऑटो ब्लिपर एंड यू ऑल्सो हैव कॉर्नरिंग ABS. तो ये सारे फीचर्स जो हैं एंड द ओवरऑल पैकेज जस्ट मेक this KTM 390 Adventure more of a complete motorcycle हमारे इंडियन रोड कंडीशंस के लिए. So if you want to buy this bike और अगर आपको इस मोटरसाइकिल के साथ लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करनी है, क्या आपने ये बाइक ख़रीदनी चाहिए या नहीं? इन शॉर्ट द आंसर इज़ येस, बिकॉज द पैकेज दैट यू गेट आपको इतने पैसे में इससे सुपीरियर पैकेज नहीं मिलने वाला है. नाउ डिस्क्लेमर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, काफ़ी यूट्यूबर्स आपको वीडियो अपलोड करके एक्सप्लेन कर रहे होंगे दैट यू कैन गेट योर स्प्रॉकेट्स चेंज एंड यू कैन प्ले अराउंड विद द बाइक्स गियरिंग टू मेक इट मच मोर ट्रैक्टेबल एंड ईजी टू राइड इनसाइड द सिटी. अगर आपको यही करना था देन यू शुड हैव प्रॉबली वेटेड फॉर द KTM 250 एडवेंचर बिकॉज द 250 Duke इज़ a lot more tractable inside the city and hence the 250 Adventure will be much easier to ride at slow speeds. अगर आपको लगता है कि एक company which is spending millions of dollars in R&D, if they are not capable enough and your 150 or 200 rupee hack is much superior and you are putting more thought in making the motorcycle much more rideable, then to each his own. And I don't think that is a smart move. I like to keep my motorcycle stock and I know what I have purchased, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा. This is based on the KTM 390 Duke. It rides typically like a KTM 390 Duke. काफ़ी explosive power delivery है and it just likes to be revved hard. तो 4000 RPM के ऊपर ही ये मोटरसाइकिल ज़्यादा खुश रहती है. So when you start riding this bike out on the highway, the first thing that I like about the KTM 390 Adventure is the seat. इसकी जो सीट है and combined with the riding position, the motorcycle is very very comfortable. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches और मुझे इस बाइक पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है. If you are 5 feet 10 also, you are going to be very comfortable on this bike. Even 6 feet tall riders will be happy on the KTM 390 Adventure. The seat base especially is very nice and wide, so you get good support on your bottom. My butts are completely rested on the bike और मुझे इसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. Of course, if you like to get more cushioning, you can get the aftermarket gel seats and all of that to make it that much more softer for your rear. तो आप ज़्यादा देर तक बाइक चला सकोगे and avoid saddle sore. So in the seat department, this is definitely good. KTM पावर पार्ट्स में इंटरनेशनली एक सिंगल पीस सीट यूनिट भी ऑफर कर रहे हैं. आई डोंट थिंक दैट इज़ अवेलेबल एट द मोमेंट हियर इन इंडिया, बट वॉट वी हैव इज़ गुड इनफ फॉर द राइडर एटलीस्ट. मैंने एज अ पिलियन इस बाइक पे अब तक राइड नहीं किया है. आई एम नॉट एक्चुअली गिविंग माई मोटरसाइकिल टू एनी वन एल्स टू राइड.
The next point which I want to highlight is the vibrations. क्या इस KTM 390 एडवेंचर में आपको vibrations feel होते हैं? Do the knobby tires, you know, cause a lot of noise when you're riding? Not really. You don't have to worry too much in the noise department because the tires are not that noisy. Because एक बार आप speed achieve कर लेते हो, of course, everything is, just overshadowed by the wind noise. जब आप इस बाइक को चलाते हो यू डू फील सम वाइब्स ऑन द पेग्स जब आप से फॉर एग्जांपल 85-90 किलोमीटर्स के ऊपर इस बाइक को चलाना चाहते हो. इट्स अ माइल्ड बज, इट इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल एट ऑल. और जब आप राइडिंग बूट्स पहनते हो एंड व्हेन यू लीव द रबर ऑन द फुट पेग्स ऑन, व्हेन यू कीप इट इन प्लेस एज इज़, जैसे बाइक आप स्टॉक खरीदते हो, आपको वाइब्रेशंस की ज़्यादा दिक्कत फील नहीं होने वाली है until and unless you really ring the throttle all the time towards the red line and then you give it a lot of thought towards the vibrations. लेकिन जब आप all out बेल्ट करते हो इस मोटर को, you are obviously more focused on the riding and the road and you are not really going to you know give minute attention towards the vibrations. So in the vibrations department, I don't think there will be too many complaints. KTM ने अपनी 390 Duke इतने सालों से refine की है. The 390 Adventure is based on the 390 Duke, and because of that, this motor now feels at home, and you are not going to have any problems adapting to this bike. अगर आपने KTM की 390 Duke चलाई है, the 390 Adventure is going to feel a little better maybe thanks to the tech features that you get, which make it that much more easier and safer to ride. Next, let's talk about the cockpit and all the switchgear and ergonomics. Everything is spot on. आपको कोई problems नहीं होते हैं to use the switches when you are on the go riding this motorcycle. और जो speedometer cluster है, obviously it is the best in class, और readability में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, and all the information that you need is displayed on the screen. और इसका जो KTM My Ride app है, couple that with the navigation functionality, it works decent. आपको इसकी जो लोकल मैप है वो डाउनलोड करनी पड़ती है ऑन द ऐप सो दैट यू गेट टर्न बाय टर्न नेविगेशन. अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क दैट मच सीमलेसली. बट इसमें मुझे ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एज गुड एज गूगल मैप्स, लेकिन एटलीस्ट जब आप किसी ऐसे रास्ते पे चला रहे हो जहाँ पे आपको कोई भी नॉलेज नहीं है अबाउट द डायरेक्शंस, दिस turn by turn navigation on the KTM My Ride app is going to be a welcome addition to your motorcycle riding experience. So that again is a plus point on long distance touring on this bike. और जो turn by turn आपको inputs मिलते हैं on the screen, that is also very easily readable और काफ़ी अच्छे से explain भी हो जाता है. तो जब भी आपको roundabout भी लेना होगा, it is very nicely and neatly displayed on the screen. So that will satisfy your touring requirement. लेकिन अगर आपको लगता है that you want something much more secure, much more accurate, the bike does have a GPS mount. आप एक थर्ड पार्टी GPS डिवाइस खरीद सकते हो और उसके लिए आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल करके दिया गया है on this motorcycle. So that is going to come in handy if you really want to ride out into uncharted, unknown terrain. The next point is wind blast on this motorcycle. इस KTM 390 Adventure के साथ आपको एक विंड स्क्रीन दी गई है विच यू कैन एडजस्ट. आप इसका रेंज ऑफ मोशन जो है वो ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो. इट इज़ एट इट्स लोएस्ट सेटिंग राइट नाउ. मैंने जैसे कि आपको बताया, आई एम 5 feet 8 inches इन हाइट एंड आई डू फील क्वाइट अ लॉट ऑफ विंड ब्लास्ट ऑन माई चेस्ट, ऑन माई शोल्डर्स एंड ऑन माई हेड एट द लोएस्ट सेटिंग. अगर मैं इसे ऊपर भी कर दूंगा इट विल हेल्प अ लिटिल. बट इफ़ यू आर अ टॉलर राइडर, अगर आपकी हाइट 5 feet 10 या 6 feet है, तो आपको विंड ब्लास्ट इस मोटरसाइकिल पे ऑब्वियसली फील होने वाला है अनटिल एंड अनलेस आप एक बड़ी फ्लाई स्क्रीन, बड़ी विंड स्क्रीन खरीदते हो. लेकिन जब आप एक आफ्टर मार्केट विंड स्क्रीन खरीदोगे, आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि आप उसका रेंज ऑफ मोशन जो है वो एडजस्ट कर पाओगे. दैट यू आर गोइंग टू हैव टू चेक विथ whoever is supplying that kit to you. The next point, let's talk about the features that you get on this bike. You have traction control, you have quick shifter, and you have cornering ABS. सभी functionality आप इस switch gear पे से काफ़ी आसानी से toggle कर सकते हो. You can check what is active when you are riding this motorcycle from the switch gear, और switch gear की quality भी काफ़ी अच्छी है. All the buttons are very good to use और आपको काफ़ी अच्छा feedback भी मिलता है. And these mirrors also work quite well, but I think I have gone off topic. We are talking about the features. So the traction control does help. Obviously you know it by now कि जब आप बाइक
ऑफ करते हो, अगर आपने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ किया था, द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फायर अप द मोटरसाइकिल, व्हेन यू टर्न द इंजन ऑन, द ट्रैक्शन कंट्रोल इज गोइंग टू बी ऑन बाय डिफॉल्ट। आप इसका ऑफ रोड मोड भी एक्टिवेट कर सकते हो फॉर योर ABS, विच इज़ गोइंग टू अलाउ यू टू लॉक द रेयर व्हील इफ़ यू थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट, but I think it is safe to have ABS active on all, I mean both the wheels all the time, so that is going to be that much more safer, especially जब आप इस बाइक को बारिश में चलाने वाले हो। The quick shifter we have already spoken about in another video, उसमें थोड़े issues थे, I have got it fixed on my motorcycle, it is not really all that smooth, एकदम seamlessly ये काम नहीं कर रहा है, but at least it is working now। जब मैंने ये बाइक नई खरीदी थी तभी ये क्विक शिफ्टर काम नहीं कर रहा था। KTM हैज़ फिक्स्ड इट फॉर फ्री, नॉट एन ऑफिशियल रिकॉल, लेकिन उन्होंने जब भी आप अपनी बाइक सर्विस के लिए लेके जाओगे, दे आर गोइंग टू गेट इट रेक्टिफाइड। ऑल्सो कोई और सॉफ्टवेयर अपडेट आई थिंक एट द डीलर लेवल आ चुका है। आई हैव नॉट रियली विजिटेड द डीलरशिप, बट आई एम सून गोइंग टू, एंड आई विल चेक कि क्या एडिशंस या क्या चेंजेस होने वाले हैं विद दैट अपडेट, और व्हाट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव विद दैट अपडेट। आपके स्पीडोमीटर क्लस्टर में ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए एक वार्निंग लाइट है। इट डज पॉप अप वंस इन अ वाइल जब आप इस बाइक को बम्प्स पे से चलाते हो। सो फॉर एग्जांपल इफ़ योर रेयर व्हील इज़ एयरबॉर्न फॉर अ मिली सेकेंड में भी, तभी भी वो ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट ऑन योर स्पीडोमीटर क्लस्टर एलिमिनेट हो जाएगी, telling you that you are not really getting the optimum traction, but then it is just for a millisecond, it is not something that is going to make you feel unsafe, या बाइक जो है आपके कंट्रोल के बाहर नहीं जाने वाली है। things will be quite good, quite easy, quite safe। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सस्पेंशन एंड राइड क्वालिटी। अब सस्पेंशन सेटअप जो है आपको इंडिया में ऑन दिस KTM 390 एडवेंचर, front shocks are not adjustable, people have been complaining a lot, and the rear monoshock is also slightly on the firmer side, तो आपको राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ ज़रूर महसूस होने वाली है। अगर आप एकदम ही ख़राब रास्तों पे से इस बाइक को चलाते हो, यू आर गोइंग टू फील अ फ्यू जोल्ट्स ऑन यू व्हेन यू आर राइडिंग दिस। येस, ऑफ रोडिंग के टाइम पे आपको सस्पेंशन सेटअप में से कोई कमी नहीं फील होने वाली है। हमने जो वीडियो अपलोड किया है एज द ऑफिशियल रिव्यू, यू कैन चेक इट आउट। वी पुश दिस मोटरसाइकिल ओवर रियली बैड रोड्स, ओवर बैड टेरेन, ओवर रॉकी टेरेन, एंड द सस्पेंशन डिड नॉट गिव अप एट ऑल। तो जो किट हमें इंडिया में अवेलेबल है, इट इज़ नॉट रियली इन्फीरियर, इट जस्ट डजंट हैव दैट एक्स्ट्रा ट्रिक अप इट स्लीव जो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। बट KTM हैज़ डन दैट टू कीप दिस प्राइस, ताकि ये बाइक जो है कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन कर सके ओवर द BMW G310 GS, which is underpowered but still more expensive। Talking about stability, the bike rides quite nicely at speeds up to 100-120 kmph। इसके बाद आपको obviously wind blast की वजह से थोड़ा nervousness feel हो जाता है। The bike does get caught up in crosswinds at time। It is not really nervous or uncomfortable completely, लेकिन जब आप किसी हैवी व्हीकल को पास कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तभी आपको वो क्रॉस विंड फील हो सकती है, या स्पेशली व्हेन इट इज़ वेरी वेरी विंडी आपको क्रॉस विंड्स इस मोटरसाइकिल पे ज़रूर महसूस होंगे। बट इफ़ यू आर अ सीजन राइडर, आई एम श्योर कि आपको इसका वर्क अराउंड पता ही है, यू नो हाउ टू राइड योर मोटरसाइकिल सेफली। जब आप हाईवे स्पीड्स पे बाइक चला रहे हो, तभी ये बाइक बम्प्स इनकाउंटर काफ़ी अच्छे से कर लेती है। इट स्टेज कंपोज्ड, ज़्यादा आपको वर्टिकल मूवमेंट भी फील नहीं होता है, यू डोंट रियली फील टू मच ऑफ वॉफ्टीनेस, और बाइक जो है लाइट होने के कारण मूव करने के लिए काफ़ी आसान है। यू हैव अ 14.5 लीटर फ्यूल टैंक ऑन दिस KTM 390 एडवेंचर। इसका ड्राई वेट जो है वो 158 kg है, एंड टू मूव डायरेक्शंस, टू चेंज डायरेक्शंस, दिस KTM 390 एडवेंचर इज़ वेरी वेरी फास्ट। तो अगर आपको लग रहा है कि ये ड्यूक 390 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्लो होगी, तो ऐसा तो नहीं है। Obviously the 390 Duke is much sharper in changing directions and turning into corners, but this KTM 390 Adventure is no slouch at all। इसके बाद बात करते हैं टायर्स की। द टायर्स, द मिडसेलर टोरेंस टायर्स जो आपको स्टॉक अवेलेबल हैं ऑन दिस बाइक, दे ऑफर यू फैंटास्टिक ग्रिप। आज तो बारिश नहीं हो रही है, बट आई हैव रिडन इट इन रेन एंड द टायर्स ऑफर्ड गुड इनफ ग्रिप। बिल्कुल भी मुझे टायर्स स्लिप होते हुए फील नहीं हुए। ऑब्वियसली आपको इस बाइक के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, सो दैट एड्स अप इन ऑफरिंग यू गुड कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ग्रिप जब आप इस बाइक की पूरी पावर जो है यूज़ करना चाहते हो
here on the Indian streets. And yes, the brakes do a decent job as well. हमने इसके बारे में रिव्यू में भी बात की है, and you know all about it. Of course, the ABS helps as well. So that's about it on this KTM 390 Adventure. आप इसका रिव्यू वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा जो हमने पहले अपलोड किया है. This is more of an ownership experience and I'm quite happy with my purchase. To tell you the truth, I wanted to buy the Royal Enfield Continental GT 650 Chrome, but then at this price, this KTM 390 Adventure just beats every other motorcycle hands down. Goodbye, ride safe and always wear full riding gear.